गाइस, तो आप देख सकते हो ये वाला बिग बाउल जिसमें क्ले पॉट पेस्ट है एंड थोड़े से थिन स्लेट पेंसिल्स है जो 50 प्लस है। आज हम इसका क्रंच करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट।
लास्ट बाइट। गाइस, तो ये रिव्यू है इस वीडियो का। एंड ये जो स्लेट पेंसिल्स थे वेट हो गए थे, पूरे वेट हो गए थे पेस्ट के अंदर डालने के बाद भी। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्लेट पेंसिल्स वेट हो गए हैं। मैंने जब क्रंच स्टार्ट किया तो मुझे कुछ आवाज़ ही नहीं आई है क्रंच की। एंड आई नो कि अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस है, नॉइजेस है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड और गाइस, मेरा एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। मेरा जो ट्राइपॉड था जिसमें मैं फ़ोन अपना सेट करके वीडियो बनाती थी, वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। एंड मुझे बहुत ही पता भी नहीं कि अब मैं क्या करूं। बट फाइनली मेरी वीडियो बन गई जैसे तैसे, बट ज़्यादा देर की नहीं बनी है गाइस। और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए पूरी प्रिपेयर थी, बट उसकी वजह से जो ट्राइपॉड है मेरा, उसकी वजह से मुझे अपनी वीडियो स्टॉप करनी पड़ी वही टाइम पे। एंड गाइस, पता नहीं अभी वो आने कितना टाइम लगेगा। मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, जैसे तैसे मैं वीडियो बना लेती हूँ। बट माइक भी आने वाला है, उसी के साथ मैंने सारा एक साथ ऑर्डर किया है। सो मे बी वो 10 से पहले आ जाएगा। एंड तब तक मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा वीडियो के लिए। सो गाइस, जस्ट स्टे विथ मी एंड डू सपोर्ट। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाऊँगी। एंड आप सब अपनी अपनी रिक्वेस्ट जो है कमेंट कर देना। मैं सबका एक एक चूज़ करके मैं खुद क्रंच करने का ट्राई करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँगी गाइस। और कोई क्लेस के जो रिव्यू चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि आप लोग देखोगे या फिर नहीं। सो और कौन से सेलर से लेना ये भी बताना मुझे, कौन से चीप प्राइजेस में है ये भी बताना, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो इसमें। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।